Hello everyone and welcome to my channel Layman Engineering. In this video we are going to look what is stress strain curve and why we use it and what does it signifies in mechanical engineering. So let's dive deep into it. So पहले से stress strain curve में जाने से पहले I would like to explain some concept regarding to this which is stress, strain and Young's modulus. तो पहले stress को देख लेते हैं. Stress it is very important to understand and stress का main formula है force per unit area. उसका unit है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन है जो फोर्स से आता है और मीटर स्क्वायर एरिया से आता है. सो स्ट्रेस का मतलब है जब जब भी आप मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझने की कोशिश समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप एक हैमर से एक नेल पे जो कील होती है उस पे मारते हैं तो कील जो भी आप सरफेस पे काम कर रहे हैं वो उसमें घुस जाती है या उसमें पेनिट्रेट कर जाती है. तो इसका मतलब है कि आपने फोर्स लगाया है वो हैमर की मदद से है और एरिया है वो आपका कील का ऊपर का हेड है जो फ्लैट सरफेस होता है वो है. तो इन दिस केस यू आर अप्लाइंग स्ट्रेस ऑन दैट नेल. एंड स्ट्रेन भी बहुत ही सिंपल है समझने के लिए. स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो लेट्स से आपके पास एक स्टील रॉड है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड आप उसको एलोंगेट करते हैं विद एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक स्ट्रेस दे के यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डाल के उसकी लेंथ को इलोंगेट करते हैं 2 सेंटीमीटर से. जो पहले 10 थी वो अब 2 हो चुकी है. जो मतलब टोटल हो गई 12 सेंटीमीटर्स. सो स्ट्रेन क्या कहता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अपनी ओरिजिनल लेंथ थी 10 और चेंज इन लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर क्योंकि 12 माइनस 10 इज 2. सो हमारा स्ट्रेन हो गया 2/10. And because of the both are the numerator and denominator both are length, so there is no unit for strain. Now let's see what is Young's modulus. Young's modulus by the definition is stress over strain, which is the ratio of stress and strain. So basically it is a material property which states that how easily any material, let's say आपके पास एक स्टील है तो Young's modulus बताता है कि वो how easily वो bend या stretch किया जा सकता है with external force applied. So this is also important characteristics in the stress strain curve. तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है. चलो अब देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है. This is the stress strain curve for ductile material. We have plotted the stress on the y-axis and the strain on the x-axis. So we can understand the stress strain curve for ductile material into two parts. One is elastic and one is plastic region. This one is the elastic region and this all is the plastic region. So when we test our material, let's say steel, aluminum or any metal, I'm addressing metal itself because this is the stress strain curve for ductile materials. So when we test it in any machine, let's say universal testing machine, how it behaves is like firstly it goes into the elastic region. This is this means when we increase the stress there is a directly proportional increase in the strain of the material. That means stress and the strain are directly proportional in the elastic region. मतलब जब हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी उतने ही प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा. और that happens till this yield point. There is a yield point. This region is known as the transition between the elastic region and plastic region. मतलब ये जो पॉइंट है इसके बाद हमारा हमने जो मटेरियल पे लोड लगाया है वो रिमूव करते ही वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाएगा. Likewise, if we remove the load from our universal testing machine, the material cannot regain its original shape and size like the material did in this region. So this is called as plastic region. That means material has uh, deformed and gone into the plastic region. So यील्ड पॉइंट वही सिग्निफाई करता है कि इसके बाद जो मटेरियल का डिफॉर्मेशन हो गया वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ है, अनलाइक कि जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ था कि जो अपना रीगेन अपना शेप रीगेन कर सकता है वो ऐसा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में नहीं होता.
उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ. दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ दैट मटेरियल कैन विथस्टैंड, एंड दिस मीन्स द हम दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो हम एक मटेरियल पर डाल सकते हैं. उसके बाद वो अपना मटेरियल प्रॉपर्टी, उसका मटेरियल स्ट्रक्चर वो डिटीरियोरेट होगा और वो फ्रैक्चर कॉज करेगा. So this is the ultimate strength point. This signifies the ultimate stress that we can put on our material sample to prior to the fracture. और उसके बाद if we continue to provide stress to the material, to loading, and then the material will fracture definitely. So this is the stress strain curve for the ductile materials. Likewise, for the brittle materials, the stress strain curves look slightly different. There is a elastic region for the brittle material, and this part is not there in the brittle stress strain curve for brittle materials. That is because the stress strain curve for brittle materials ends like here. The elastic region is there, and instead of going into plastic deformation, the brittle material just breaks here. That means this point occurs here itself for the elastic material. I will put a image here into that shows the stress strain curve for the brittle material, so that you can easily understand the difference between the ductile and brittle material. So this was my video on stress strain curve for ductile material. I hope you liked it. If you liked it, give it a like and comment if you have any query, or if you find my explanation was not up to the par. You can comment and I'll address it. I reply all to my comments, and looking forward to you in the new video, and I'll be posting it soon. Stay tuned and subscribe to my channel.